Hi future officers, welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 series session in which we cover the most important current affairs from the exam point of view. I believe that all of you are happy, healthy and preparing well for your upcoming exams, and we have always promised you that after every 5 CT 360 series session, we will be coming with a very important revision session, and that's why I'm back with the very important revision session of the February 2024 part 2. So if you're someone who has covered all the important current affairs of the past 2 weeks but you have not revised it, then this session is really going to help you. And if you're someone who has revised the all important current affairs but you have not analyzed whether you have retained all the important information, then this session is really going to help you all. So in overall, this session is not just going to help you to revise, but it will also help you to rise and shine in your upcoming targeted exams. So my dear friends, before starting the session, a very small request to all of you that please quickly tell me in your chat box what exactly is the right answer for the upcoming question. So whatever the question I will be asking you, you have to tell me your answers in the comment section. And also after the end of the session, you will be telling me your scores out of 25, that how many questions you have answered correctly out of 25 in this particular session. So let's begin the session with the very first question here on the screen. So the first question is basically on the GaganYan mission. So we all know guys that GaganYan mission is really expected to be executed in the end of year 2024, and we all know that recently the name of the Indian astronauts who will be sent to the orbit has been unveiled by the Prime Minister Narendra Modi ji, and this question is on the similar lines. The question is that who among the following does not belong to the group of Indian astronauts who has been selected for the GaganYan mission. So 5 options are being there. You have to tell me the name of the person who is not the part of that group. Please understand the demand of the question. It is being asking you to identify the name of the person who is not the part of that group. And what is the right answer here? The right answer to this particular question is option E, that is Group Captain Arav Chaudhary is not the part of this group. So you have to basically remember these 4 names because they are really very important, because these are those people who will be the part of this GaganYan mission. Okay, so I hope that this point is very much clear to all of you guys. Let's move on to the next question of the today's session. And the next question here is on the recent data from the Food and Agriculture Organization. So FAO according, how many people are expected to be chronically undernourished by the year 2030? Chronically undernourished means the people who are really undernutrition for a very long time. So my dear friends, quickly tell me how many people are expected to be chronically undernourished by the year 2030. What exactly that number? That number is basically 60 crore. Okay, so 60 crore people are expected to be chronically undernourished by the year 2030. That was the second question. Let's move on to the third question. Guys, let me tell you once again that today's session is going to be a rapid fire one. I'm not going to explain you all the things because we have already explained those important parts in our regular sessions. So you can always watch those sessions and you can always come back to this particular session. Okay, but let's just try to see what exactly the question is asking, and let's try to identify that what exactly is the correct part, the incorrect part, and what is the right answer. So अगला question आप सभी के सामने on the Sudarshan Setu. So guys, just evaluate these statements about the Sudarshan Setu and try to identify the incorrect statement with respect to the Sudarshan Setu. You have 20 seconds. Please quickly go through these statements and identify the incorrect statement here. So guys, first of all, whenever such kind of questions are being asked in the exam, please make sure that you are focusing on the keywords. So अगर हम बात करते हैं पहला keyword यहाँ पर क्या in the very first statement, that it connects the Bet Dwarka Island to mainland Okha in Gujarat's Devbhoomi Dwarka district. ठीक है? Second statement is basically talking about the total length of the bridge. Third statement is saying that it is a 4-lane cable-stayed bridge. And उसका दूसरा नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है. Okay, the fourth statement is about the features of the footpath, that it adorned with the verses from the Bhagavad Gita and the images of Lord Krishna. Okay, so quickly identify the basically that particular statement which is the incorrect one. So guys, if I talk about the basically the length of this particular bridge, it is 2.32 kilometers, and that is why the statement is incorrect, and that's why the right answer will be option B, that is statement 2 only is the one which is incorrect one. Okay,
So basically guys, we have already discussed this particular topic in a very detailed manner. Let's move on to the next important topic and the next question, that is the 4th edition of Khelo India Winter Games. So Khelo India Winter Games के regarding आपको अब identify करनी है. Here we have given the 3 statements. You have to identify the incorrect statement. तो 3 statements आपके सामने mentioned है. पहली statement में it is talking about the mascot of the game, that is शान. ठीक है, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे. It is basically the mascot of the 4th Khelo India Winter Game. Second statement is talking about the logo of this particular game, and the third statement is that event is exclusively hosted. So we always tell you that in the exam point of view, what we are required to cover whenever such kind of games are being announced, you have to make sure that yes, you remember that in which year they are going to be held and what is the venue, which place will be hosting this particular event. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं the third statement says that the event is exclusively hosted by the Union Territory of Ladakh for the first time. That is absolutely right. But let's focus on the second part of the statement. It states that without the involvement of Jammu and Kashmir. Let me tell you, my dear friends, that this event will be hosted together by Ladakh and Jammu and Kashmir. That is why this statement is incorrect. So the right answer will be option D. That is only statement 3 is incorrect. Let's move on to the next question. So next question is on the Food Corporation of India. So guys, let me tell you that recently authorized capital of FCI has been increased by the government of India from 10,000 crore, and you have to tell me that what is the new value of the authorized capital of Food Corporation of India. Basically, it is really going to enhance the efficiency of the organization in the various operational areas. But we have to remember this fact because this is the fact which is expected to be asked in the exam. And what is that particular value? The new value is 21,000 crore rupees. I hope this point is clear, guys. Let's move on to the next question. Next question is on the Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So we have discussed that in the detailed manner in our CT 360 series session. And guys, today we are having this question again, and you have to identify the incorrect statement regarding this particular mission. So once again, you have to focus on the keywords here. But let me tell you once again, guys, please make sure that yes, you are reading this question. काफी अच्छे से आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और फोकस कीजिए कीवर्ड्स के ऊपर कि क्या कीवर्ड्स हैं, कौन सा पार्ट गलत मार्क्ड है. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च ईयर इज बीइंग गिवन एंड द एम ऑफ दिस मिशन इज बीइंग गिवन. ठीक है, second statement is basically that this mission is a centrally sponsored scheme. उसका financial allocation आपको दिया गया है, and apart from that objective को भी discuss किया गया है in the second statement. You can see here that these statements basically comprises of so many dimensions from one single scheme. In one statement there are 3 dimensions are being asked, like the type of the scheme, it is centrally sponsored scheme, what is the financial outlay, then what is the objective. If you remember all these 3 points, then only you will be able to answer this question correctly. Okay, then the third statement is about the tenure of the Swachh Bharat Mission Urban 2.0 and about the funding pattern between the center and the states. So here the 3 statements are this. You have to identify the incorrect statement with respect to Swachh Bharat Mission Urban 2.0. तो पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं guys, so basically it is asking that yes, it was launched in 2021 and that is absolutely right. ठीक है, that particular statement is absolutely right. Moving on to the second statement, it is a centrally sponsored scheme. That's really good. That's really correct. But the financial allocation is being mentioned incorrectly here. And guys, when I talk about the third statement it states the funding pattern between the center and state distribution of the project is to be 100% for the UTs with the legislature. Let me tell you that this funding pattern is for those UTs which are without legislature. That means 100% funding by the center. Okay, that is why this statement number 2 and 3 are incorrect. The right answer is option C. I hope that these points are very much clear to all of you. And guys, if still you are not aware about the various details about this mission, do not worry about it. I am giving you the reference of the session in which we have covered this in a detailed manner. The topic was being covered in the CT 360 series session of 23rd to 24th Feb 2024. You can see here that it has been mentioned in the detailed manner, the other components, what are the different components of the mission, and all of the details are being covered in that particular session. Okay, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है आपका जल जीवन मिशन पे. You can see here that a long paragraph has been mentioned. But after that, a very small and easy question has been asked. What is the question? You have to just tell me the name of the state जिसने recently achieve किया है 100% coverage under the
हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। आपके सामने 5 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। क्विकली टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विच हैज अचीव्ड 100% कवरेज अंडर द हर घर जल। सो गाइज आई बिलीव कि आप सभी को मजा आ रहा होगा आज के सेशन के अंदर। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी है, कुछ इजियर लाइन पर भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है क्वेश्चन, आपको बताना था नेम ऑफ द स्टेट। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। दैट इज द राइट आंसर विच हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% कवरेज अंडर द हर घर जल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट यू कैन सी हियर द वेरियस डिटेल्स अबाउट द जल जीवन मिशन विच वॉज लॉन्च इन 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके ऑब्जेक्टिव्स यहां पर दिए गए हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और फंडिंग पैटर्न कैसे रहने वाला है ये भी यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। द टारगेट ईयर इज ऑफ 2024। सो ऑल द पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन अ डिटेल्ड मैनर इन द CT 360 सीरीज सेशन ऑफ 16th to 20th Feb 2024. You can just go back to that session after this session and you can just cover that particular topic in a detailed manner if you are not able to retain the important points about this particular mission. Moving on to the next question, guys. For all the cricket lovers, we all know that recently one of the Indian spinner has achieved the feat of claiming 500 test wickets. And guys, this question is for all those cricket lovers. You have to identify the name of those two people. Basically, you have to identify the name of those cricketers who has basically achieved the 500 test wickets. And the options are before you. The 5 names are being given: Anil Kumble, Kapil Dev, Harbhajan Singh, Ravichandran Ashwin, Zaheer Khan। सभी लेजेंडरी क्रिकेटर्स रहे हैं। एंड गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है उन दो प्लेयर्स का नाम। What is the name of those two players? So we all know, guys, that Ravichandran Ashwin is the name of the person who has recently claimed the 500th wicket, the 500th test wicket. And when I talk about the other person who is the highest wicket taker in the test from the Indian side, that is Anil Kumble. The right answer will be option C. That is both 1 and 4. That is Anil Kumble and Ravichandran Ashwin. That is the right answer. ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था और हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट से भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं आरबीआई के एग्जाम की, तो लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर क्वेश्चन आया था। उससे पिछले साल में भी देखें तो वेस्ट इंडीज ने जो टेस्ट क्रिकेट में कोई चेज किया था वो कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट चेज है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सोलर बैटरी प्रोजेक्ट कमीशन बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन छत्तीसगढ़। आपके सामने इस पर्टिकुलर कमीशनिंग पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यू हैव टू गो थ्रू देम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सेकंड स्टेटमेंट इज ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के अंदर, कैपेसिटी उसकी मेंशन की गई है। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट ने फंडिंग रिसीव की है वर्ल्ड बैंक से और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। सी गाइस, हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी कि अगर हम बात करें वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई व्हाट एग्जैक्टली द राइट आंसर? The right answer will be that it has been commissioned by the Solar Energy Corporation of India under the aegis of Ministry of New and Renewable Energy, and that is the right answer to this particular question. ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन is also on a very very important achievement which has been recently achieved by India. As you can see here that India का पहला artificial intelligence model है जिसको डेवलप किया है रिसर्चर्स ने, and it is designed to accurately determine the age of a fetus. So fetus की age को वो second और third trimester के अंदर बता देता है। But what exactly is the name of that AI model which has been recently developed? What is the name of that? You have to tell me the name of that particular part. So what is the right answer? Right answer is Garbhini GA2 that has been recently developed, and this is the artificial intelligence model of India. Okay, that is the right answer. You can see here some other important details about this. I won't be discussing them in a detailed manner today because we have already covered them in a detailed manner in the CT 360 session of 28th to 29th of February 2024. Recently, last session के अंदर ही गुरकीरत सर ने इसको काफी अच्छे से explain किया था. You can just after this session, if you are not aware about this topic, you can just go back to that session. ठीक है, बस इस पर्टिकुलर नाम को आप गूगल कर लीजिएगा ऑन द यूट्यूब एंड यूट्यूब पे जाके इसको टाइप कीजिए एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सेशन. ओके,
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. So अगला क्वेश्चन is regarding a kind of a partnership which has been done between the two entities, and the aim of it is to merge Viacom 18's media operations into the Star India. आपके सामने क्वेश्चन है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दोस एंटाइटीज. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स दैट ये एक बहुत ही बड़ी डील है और ये एक जॉइंट वेंचर बनाने वाले हैं ऑफ अबाउट 8.5 बिलियन डॉलर्स. और जब भी हम बात करते हैं इतनी बड़ी वैल्यू की, तो इतनी बड़ी वैल्यू को कौन अफोर्ड कर सकता है इंडिया के अंदर? दैट इज रिलायंस. तो रिलायंस एक ऑप्शन है और आपको बताना है कि उसके साथ वो कौन सी एंटाइटी है जिसने की ये डील की है. द नेम ऑफ दैट एंटाइटी इज बेसिकली वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज Reliance Industries Limited and the Walt Disney Company. That is the right answer. Moving on to the next question, guys. Next question is basically on the flood management and border areas program. So once again, you have the three statements here. You have to identify the incorrect statement. Let me tell you guys why exactly we are covering these number of statement based questions, because in the एग्जाम के अंदर हमने देखा है कि जो एज पर द रीसेंट ट्रेंड्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट यस वी हैव द हैबिट, वी आर इनटू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज. ओके, तो पहला स्टेटमेंट आप सभी के सामने है कि ये कौन से ईयर के अंदर रोल आउट किया गया था और उसको एक्सटेंशन जो मिला है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट्स प्रेजेंट टेन्योर. सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट द टोटल आउटले, कि टोटल आउटले कितना रहने वाला है. थर्ड स्टेटमेंट इज बेसिकली अबाउट द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट की हमने बात की कि ये 17-18 में रोल आउट हुआ था एंड हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड फॉर 2021-2026. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. Second statement, the total outlay for the next 5 years is rupees 10,000 crore, which is incorrect. If you guys know about what exactly is the correct outlay, please tell me in the comment section. The third statement is basically about the implementing agency, which is mentioned correctly. That is the Department of Water Resources under the Ministry of Jal Shakti. So guys, what is the right answer? Right answer is option B. अगर हम बात करते हैं कि what exactly is the total outlay for the next 5 years, guys, it is going to be 4,100 crore rupees. That is why the statement number B was incorrect. And that is why the right answer was option B. I hope this point is clear to all of you. So guys, I believe कि आप सभी को मजा आ रहा है इन challenging questions को solve करके. You are really enjoying them. If you are enjoying them, then please mention in the comment section that yes, you are enjoying this particular session. और आपकी revision अच्छे से हो रही है. And yes, you are revising, rising and shining for the exam. ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द न्यू अम्ब्रेला स्कीम, दैट इज द सेफ्टी ऑफ वुमेन with a significant funding. इसको recently अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा. So here basically the 5 statements are being given to you. You are required to identify the correct statement with respect to this particular scheme. Once again, what you are required to do, just focus on the keywords. Statement number A is talking about the entire funding of the scheme, कि ये responsibility कौन लेगा? By the Ministry of Women and Child Development. Second statement, ये जो scheme है, it solely focuses on the capacity building and training of the investigators. और ये कोई allocation नहीं करेगी for the upgradation of forensic capacities. जो हमारे emergency response ecosystems है, forensic capacities है, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा, उनके लिए कोई allocation नहीं दी जाएगी. Third statement, जो extended tenure है इसका, that is from 2021 to 2026, which aligns with the 16th Finance Commission. तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है with respect to the safety of women. Guys, what is the right answer? The right answer is option E, that is none of the above. You must have seen in the exam, if you have appeared earlier, that there is the option none of the above also in the options, in the 5 options. And let me tell you that there are some certain cases as well when you will find such kind of option as the right answer in your question, and this is one such question. So हम इस सभी चीजों को डिटेल में कवर करते हैं. आप देख सकते हैं guys, अगर हम बात करें इसकी पीरियड की, तो इट इज बेसिकली फ्रॉम 2021, 2022 to 2025, 2026, and this aligns not with the 16th Finance Commission, it aligns with the 15th Finance Commission period. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं फंडिंग की, तो फंडिंग यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं करने वाली है. इट विल बी डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमने बात की थी कि जो फोरेंसिक डेटा है और उसकी कैपेसिटी पे कोई एलोकेशन नहीं किया जाएगा, देन वंस अगेन दैट वाज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट विल फोकस ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल फोरेंसिक साइंसेस लैबोरेटरीज and will also include setting of national forensic data center. That is why that particular statement was incorrect. ठीक है, I hope this point is clear to all of you. And I really great that if you remember all this important information about this particular scheme. Moving on to the next question, guys. Next question on a very important scheme, that is the PM-USHA scheme. And once again,
you have to identify the correct combination of statements which are being mentioned here. 4 स्टेटमेंट्स आप सभी के सामने दी गई हैं और आपको इनको गो थ्रू करना है. Once again, you have to focus on the keywords, and this scheme here is the PM-USHA, which stands for प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. So kindly go through them quickly and tell me the right answer. तो 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने है गाइस, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट है about the launcher of the scheme and it implements the pillars of NEP 2020. That is absolutely right. Second statement is about the funding pattern ki center और state governments के लिए it will be 75:25 for all the states. Let me tell you guys that this funding pattern has been incorrectly mentioned here, so this statement is absolutely incorrect. Third statement is it is centrally sponsored scheme managed by the Ministry of Education, and the fourth statement is ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी फुल फंडिंग फॉर द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर. तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट मेंशन है और आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट. सो जैसा कि आई रियली एक्सपेक्ट कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया होगा, एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 and 4 आर करेक्ट, एंड द स्टेटमेंट व्हिच आई ऑलरेडी मार्क्ड दैट वाज इनकरेक्ट, सो द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ओके, सो यहां पर हम देख सकते हैं गाइस, अगर हम बात करें इस PM-USHA स्कीम की, तो बेसिकली रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को यहां पर लॉन्च किया गया था एज द PM-USHA इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ओके, सो दैट इज द राइट पार्ट. और यहां पर हम देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द फंडिंग पैटर्न between the center and the state governments and for the PM-USHA scheme. ठीक है, अगर आपको ये फंडिंग पैटर्न याद नहीं है तो आप देख लीजिए. इट इज 90:10 for the north eastern states with Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, 60:40 for other states with the legislature, and UTs with legislature, and UTs without legislature के लिए it will be 100% centrally funded. तो ये स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन लाइंस पर क्वेश्चंस आते हैं. I hope this point is clear, guys. Let's move on to the next question. So next question is on the Milan 2024, which is one of the largest multilateral naval exercise. आपके सामने क्वेश्चन है 2 डायमेंशंस पे जो कि हमेशा पूछी जाती हैं from the defense exercises, that what exactly is the name of the country which is hosting it, and apart from that you are also required to remember that कौन सी प्लेस पर उसको होस्ट किया जा रहा है. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर लाइन. सो ये अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मिलन 2024 जिसके अंदर 50 से ज्यादा नेवल फोर्सेस पार्ट लेने वाली है, पार्ट ले चुकी हैं बेसिकली. सो ये कौन सी कंट्री की ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, दैट इज इंडियन नेवी. और इसको कहां पर स्टार्ट किया गया रिसेंटली, इट इज कमेंस्ड इन विशाखापट्टनम. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया विशाखापट्टनम. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्राइबल फेस्टिवल जिसको रिसेंटली विजिट किया था श्री अर्जुन मुंडा जी ने, और उसके सामने आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ट्राइबल फेस्टिवल. लेट मी टेल यू दैट इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. आपके सामने 5 स्टेटमेंट है. वंस अगेन लेट्स फोकस on the keywords in these 5 statements. So पहली statement है, it is a biennial festival celebrated by the Koya tribe, which is absolutely right. Second statement, Medaram Jathara is considered as the largest tribal festival in India. Once again, it is absolutely correct. Statement number 3 is that the festival is celebrated in association with the Tribal Welfare Department, Government of Odisha. तो गाइस अगर हम बात करते हैं कोया ट्राइब की जिसको मेंशन किया गया है पहली स्टेटमेंट में, तो कोया ट्राइब बेसिकली होती है तेलंगाना के अंदर, बट यहां पर मेंशन किया गया है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. सो दैट मींस द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर डी स्टेट्स दैट ये जो फेस्टिवल है इसको डिक्लेयर किया था स्टेट फेस्टिवल इन 1996. एब्सोल्युटली राइट. ये बाइनल ट्राइबल फेस्टिवल है और सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का आफ्टर द कुंभ मेला. दिस इज आल्सो राइट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हिच इज द इनकरेक्ट पार्ट. ओके, let's move on to the next question, guys. Next question, we all know guys that last year the whole India was in awe because Chandrayaan 3 was the first to land on the southern region of the moon. And guys, let me tell you that recently one of the first private company has also achieved that particular feat, and this question is about all that particular achievement. Okay, so you have to basically consider the following statements about the recent development in lunar exploration and identify the correct ones. So यहाँ पर पहला statement है, the Odysseus spacecraft constructed by Intuitive Machines was launched using SpaceX Falcon 9 rocket. That is absolutely right.
अगर आपने हमारा वो CT 360 सीरीज का सेशन देखा है तो आप सभी जान जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है एंड दिस क्वेश्चन बेसिकली कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल। तो अगर आपने क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया दैट मींस आपने पूरा का पूरा वो न्यूज आर्टिकल को रिवाइज कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, Odysseus carried a total of 10 NASA payloads to the Mars. I was talking about the moon. Here it is mentioning Mars. That's why the statement is also incorrect. The third statement is the Nova Sea lander module of Odysseus is the first commercial spacecraft to land on the moon's south pole region. That is absolutely right. Statement number 4, this mission marks the first time a government space agency which has successfully landed on the lunar surface. Guys, I have already told you that it is about the commercial space landing and it was the first commercial spacecraft to land, then how it can be a government space project? So that's why the statement number 4 is incorrect. Statement number 5, Chandrayaan 3 was the first to land on the moon's south pole region, followed by the Nova this year. That particular statement is absolutely right. So what will be the right answer? Can you tell me the right answer in the comment section? कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है यहाँ पर? स्टेटमेंट नंबर 2 and 4 is incorrect. So the right answer is 1, 3 and 5 क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करनी थी करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट पार्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन इज ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस व्हिच वाज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली एंड द नेम ऑफ द अलायंस इज द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। बेसिकली दिस वाज अर्लियर इन द न्यूज बट राइट नाउ व्हाई इट वाज इन द न्यूज, बिकॉज उसका वेबसाइट और उसका लोगो को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to this particular alliance. So पहली स्टेटमेंट है कि जो अलायंस है 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग जो कि डेवोस में हुई थी वहां पर इसको लॉन्च किया गया था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट, उसका एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द वुमेन्स हेल्थ एजुकेशन एंड एंटरप्राइज, एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली फोकस करता है वुमेन्स के ऊपर ही, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Third statement is about the network partner, guys. It says that Invest India is serving as the network partner for this initiative. Let me tell you that the network partner for this initiative is not the Invest India, but it is the World Economic Forum, जिसकी एनुअल मीटिंग में इसको लॉन्च किया गया है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अलायंस, ठीक है। अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में नहीं कवर किया है, यू कैन जस्ट गो बैक टू दिस पर्टिकुलर सेशन एंड कवर दैट टॉपिक इन अ डिटेल्ड मैनर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द स्टेट फ्रूट। सो काजी नींबू को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है स्टेट फ्रूट और क्वेश्चन है बहुत ही इजी लाइन पे, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट जिसका ये स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हुआ है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज ऑप्शन ई, दैट इज असम। असम इज द राइट आंसर, ठीक है जी। सो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नेम्ड पुष्पक। तो इस पुष्पक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है एंड इसके अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे हर एक स्टेटमेंट की तरफ। पहली स्टेटमेंट, ये एक ऑल रॉकेट फुली रीयूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड स्टेटमेंट, उसका एम क्या है कि हम कॉस्ट जो एसोसिएटेड है स्पेस लॉन्चेस से उसको यहां पर रिड्यूस करना चाहते हैं बाय नियरली 80%, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट अबाउट द डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिजाइन किसने किया है? इट वाज डिजाइन बाय इसरो, वंस अगेन इट इज द करेक्ट पार्ट। स्टेटमेंट नंबर डी, the design was approved by the National Review Committee in 2022. See guys, let me tell you that whenever you find such kind of years, percentages, make sure that yes, you are analyzing them properly, that whether they have been mentioned correctly or not. And in this question, the year has been mentioned incorrectly and the right answer here is 2012. The year in which National Review Committee has basically approved this particular design of Pushpak. And the statement number E, autonomous landing mission was successfully conducted in 2023 regarding this, and that is absolutely right. So what is the right answer? Right answer is option D. Option D is the one which is the incorrect part. I've already given you the correct answer to that particular thing as well. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत जीपीटी हनुमान के ऊपर और आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग इट एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। सो गाइस, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हम चैट जीपीटी को आजकल यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। अब आपके सामने क्वेश्चन है, बेसिकली मुझे बताइए कि व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट, इट इज प्राइमरीली अ कमर्शियल वेंचर बाय रिलायंस जियो एंड 7 इंडियन आईआईटीज। Second statement, the AI model supports only 10 Indian languages to ensure specialization in high demand languages. BharatGPT Hanuman is an open source project with multimodal capacities
capabilities supporting text, speech and the video content generation. Option D, the AI model is designed with the parameters only up to 1.5 billion to focus on the speed over complexity. Let me tell you guys, ये जो AI model है, तो इसकी अगर हम parameters की range की जाए तो it is from 1.5 billion to 40 billion. So that is why this statement is absolutely incorrect. अगर हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, तो इट सेज दैट 7 इंडियन आईआईटीज आर इन्वॉल्वड, बट नो, देयर आर 9 आईआईटीज व्हिच आर बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. जब हम बात करते हैं कि कितने इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, तो इट विल बी सपोर्टिंग 22 इंडियन लैंग्वेजेस. सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट बी इज आल्सो इनकरेक्ट. सो कौन सी स्टेटमेंट रह गई जो कि करेक्ट है? द स्टेटमेंट सी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू भारत जीपीटी हनुमान, एंड दैट इज व्हाट it has been mentioned here in a detailed manner. If you have not covered them, let me tell you, Gurkira sir has explained it in a very clear manner. You can just go back to this particular session and you can cover this particular initiative from that. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन once again for all the cricket lovers. The question is, as we all know guys, that in the recent test match which has been happened, so यशस्वी जायसवाल ने यहाँ पर विराट कोहली, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, उनका रिकॉर्ड इक्वल किया है, दैट इज ऑफ द मैक्सिमम रन्स in a home test series. But let me tell you that this is the second highest value. But you have to tell me, you have to identify the name of the person who holds for the maximum number of runs. ठीक है, तो क्या है उनका नाम? मोहिंदर अमरनाथ, चेतन शर्मा, संदीप पाटिल, कपिल देव, सुनील गावस्कर. What is the name? So guys, it is basically the famous Indian legendary cricketer, that is Sunil Gavaskar, who holds the record for the most number of runs, and that is 732 runs in a home test series, and he achieved this particular feat during the West Indies series in 1978-79. That is the right answer. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के ऊपर, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21st of February को. ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, यू हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. ओके, तो पहली स्टेटमेंट जो थीम है इस साल की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, बेसिकली वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दैट इट प्रमोट्स द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग. सेकंड स्टेटमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 40% ऐसी ग्लोबल पॉपुलेशन है जिसके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का इन देयर own languages. Third statement is, out of 7,000 languages spoken across the world, 45% are endangered. And let me tell you guys that all these statements are absolutely right from this particular perspective. ठीक है, so guys, मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग द चैट जीपीटी व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट भारत जीपीटी. सो आपके सामने क्वेश्चन है कि आप सभी ने चैट जीपीटी को काफी यूज किया होगा, बट वी हैव आई रियली थिंक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट अनअवेयर अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन द चैट जीपीटी. इफ यू नो, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन द चैट जीपीटी. ठीक है, लेट अस सी दैट हु नोज दिस पर्टिकुलर पार्ट. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन इनॉग्रेटेड recently. You have to go through the statements regarding the same, identify the incorrect statement. So guys, in all these statements repeatedly throughout the session, I'm telling you that please focus on the keywords and understand the demand of the question. What is it demanding? To identify the incorrect statement. 3 statements are being given. पहली statement है, ये जो center है inaugurate कहां पर हुआ है? उड़ीसा के अंदर हुआ है. इसको manage कौन करेगा? Ministry of Finance करेगी, which is absolutely incorrect. Second statement, implementing agency जो है इसकी, that is National Skill Development Corporation, absolutely right. Third statement, it aims to provide 1200 students in sectors like agriculture, space research and heavy machinery. Let me tell you guys that it is not related to these particular sectors. That is why this statement is also incorrect. So what will be the right answer? Right answer is option D, that 1 and 3 statement are the incorrect statements. So what are the right part? You can see here that कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर? मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और कौन से सेक्टर्स पे फोकस करने वाला है? इट इंक्लूड्स मीडिया, entertainment, leather, tourism, hospitality, IT, ITES. So these are basically the sectors on which it will be focusing on, and that is why those 2 statements were incorrect from this particular initiative, that is the first skill India center for the country. कहां पर हुआ है? संबलपुर, उड़ीसा के अंदर हुआ है. ठीक है, बड़ा संभल के आंसर करना है इस क्वेश्चन को गाइस, अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट वाज द राइट पार्ट. सो गाइस, बढ़ते हैं अपने इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन व्हिच इज ऑन द IBSA. IBSA स्टैंड्स फॉर इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम, एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू IBSA. सो गाइस, रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज आर्टिकल, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर
contribute किया है $1 million to India, Brazil and South Africa facility for poverty and hunger alleviation. और IBSA की रिलेटेड भी आपको न्यूज पता होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट यस, जो भी ऐसे जो फॉरम्स हैं न्यूज में रहते हैं उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं. तो यू हैव 5 स्टेटमेंट्स हियर. First statement is regarding the year in which it was formed. It was formed under Brasilia in June 2003. Absolutely right. Statement number B, that the fund was established in March 2004. Once again, this statement is absolutely correct. Third statement is IBSA became operational in 2006. Operational कब हुआ था? 2006 में हुआ था. This is absolutely right, and the right answer is option D, that all A, B and C are correct with respect to IBSA. So guys, I believe that you must have answered the question correctly. And guys, that was the last question of the today's session. I believe कि आज का session आपको काफी अच्छा लगा होगा. And if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And my dear friends, as I told you that this particular session is not just going to help you revise, it will also help you to rise and shine in your exam. Do you agree with me or not that you will revise, rise and shine with this session? And if yes, please comment the same in the comment section. And if you are having any kind of query with respect to this session, feel free to ask your queries in the comment section. You can also mail us at hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. So my dear friends, thank you for joining the session. We will keep on coming up with such kind of revision sessions for all of you as promised to you. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.